SITAL Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. Headlines of the day. Heat wave as the weather remains in summer in the desert of Rajasthan. The scorching has started in the first half of the Chaitra. Some areas have also been affected by the heat wave. And the interview with young aspirant of Lok Sabha. News number 1. Heat wave as the weather remains in summer in the desert of Rajasthan. The scorching has started in the first half of the Chaitra. Some areas have also been affected by the heat wave. This news is sponsored by PSJ. Here is the report. The matter of concern for Bengal is that by the end of this week, heat wave may start in some parts of South Bengal. The Alipur Meteorological Department made this statement. It is also said that there is a possibility of heat wave in Purulia, Bankura, Jhargram till Friday. A heat wave warning has also been issued from parts of Jharkhand and Odisha this week. According to Meteorological Department, heat wave is prevailing over a wide area in northwest including Rajasthan and Haryana. Alipur Meteorological Department Chief Ganesh Kumar Das said that the western district of the state would witness a maximum temperature of 41 degrees Celsius as heat wave. It is feared that the temperature in the western district may reach 40 to 41 degrees this week. At the same time, the temperature in Bankura 39.6 reached around 40 degrees, Panagarh 38.6, Mednipur 38, Purulia 38.3 and Sriniketan 37.2 are behind. Mednipur is touched with Barakpur 38 and North 24 Parganas, Damdam 37.8 or Salt Lake 36.5 are not far behind. The maximum temperature in Calcutta was 36.6 degrees. The maximum temperature in Siliguri is 29.2 degrees and in Jalpaiguri 29.5 degrees. Malda Balurghat is feeling hot. According to the weather office, there is an access from Sikkim to Jharkhand. Water vapor is entering from the Bay of Bengal. Due to this, there is a possibility of light rain in two parts of Murshidabad and two parts of 24 Parganas this week. Stay with us for more news after the break. Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. News number 2. Sanctoria. According to VIKAS PRASAD, on Tuesday, the second day of nationwide strike. This news is sponsored by Hillview Hospital. In the Sanctoria zone, the shop, the market all remained open. Tempos, small and big vehicles were seen moving. The number of minibuses was found to be less under the route. However, the number of government buses passing through this zone remained. But in view of the strike, the passengers were also less visible. There was no effect of strike in the suburban area of Adra Rail. Train service was normal since morning. Purulia Havra and Asansol Haldia ran as per their scheduled time. Shops and markets remained open as usual, although private buses were not seen. The government bus service continued as usual. Despite this, some people were upset due to non-operation of private buses.
দ্বিতীয় দিন তো দেখা যায় যে ট্রেন চলছে, নিত্যদিন মানুষজন বাসের জন্য অপেক্ষা করছে এই বাস স্ট্যান্ডে। তো কি কি ধরনের অসুবিধার মুখে পড়ছে? প্রচণ্ড অসুবিধা মানুষের। শুধু সরকারি বাস ছাড়া পাবলিক বাস তো চলছে না, এতে মানুষের যাতায়াতের প্রচণ্ড অসুবিধা। এবং এখানের মানুষ যে আশপাশের দোকানদার যেগুলো খুলেছে সেগুলো মোটামুটি একটু হচ্ছে, টোটালি নর্মালি আছে আমাদের, কিন্তু মানুষ অসুবিধায় তো পড়ছে একটু। এই অসুবিধাটার জন্য মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা, মানে এটা আর কী বলবো, এমনিভাবে করা বন্দর সে আমরা তো বলবো এটা উচিত নয়। News number 3. Opening of the office. Election office of Congress has been inaugurated by its district secretary in Horton Road. Dignitaries present were Debes Chakrabarti, SM Mustafa, Shah Alam, Prem Narayan Singh, Muhammad Ijaz Ahmad, Shahina Parveen, Israr Ahmad and several others. This news is sponsored by Motion. तो जब नींव छापने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर एक नींव जरूर छाप लेना। मेरा बात का अगर बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तीनों काउंसिलर आज एक साथ कारपोरेशन में रहेंगे। कारपोरेशन में जो हम लोग का एजेंडा होगा, उन लोग जो रखे हैं, हम लोग का एजेंडा होगा बुराई नदी का साफ सफाई के साथ सबसे पहले मलबा निकाल के बाहर फेंकने का। कल नदी का माफी हो रहा था, हम वहाँ पे खड़े थे, हम लोग देख रहे थे। बहुत सारा घर, बहुत सारा पार्टी ऑफिस इलीगल बना हुआ है। हम बोर्ड मीटिंग में बोलेंगे कि किसी का भी पार्टी ऑफिस हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, आसनसोल शहर दोबारा न डूबे, उसके लिए अगर शहीद करना पड़े तो शहीद कर दीजिए, मलबा निकाल करके फेंकिए, ईमानदारी के साथ साफ सफाई करवाइए। दूसरा इशू रहेगा पानी का, जो हाहाकार मचा हुआ है। भाई 15 साल से आपका यहाँ हमारा सरकार मगरबी बंगाल में है, बोर्ड आप लोगों का, मेयर आप लोगों का है, छप्पा मार करके ठप्पा मार के 91 तक पहुँच गए। तो भाई उसी ढंग से इलाके में काम भी करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे, अंदर में हम लोग आवाज लगाएंगे, मीडिया वाला। এই নির্বাচনী কার্যালয় যে উপলক্ষে করা হয়েছে, সেই আসানসোল লোকসভার তরুণ যুব নেতা, এই লোকসভার প্রার্থী, দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের সাথী প্রসেনজিৎ বৈদ্যুতিক এবং সামনে উপস্থিত কংগ্রেসের বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃত্ব কর্মীরা এবং একজনকে প্রার্থী দিয়েছে, যে প্রার্থী আসানসোলের কথা তুলে ধরবে, যে প্রার্থী আসানসোলের সাধারণ মানুষদের তাদের দিন প্রতিদিনের সমস্যার কথা, তাদের রুটি রুজির কথা তুলে ধরার জন্য আমরা একজন ভূমিপুত্রকে, যে আসানসোলে থাকে এমন একজনকে আমরা এখানে প্রার্থী করেছি। Stay with us for more news after the break. बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SBI रोड में है। News number 4. Illegal coal and white stone trade is rampant in MANTHAN reservoir of Kalipathar village under Salanpur police station. This news is sponsored by India International School. By trade, illegal coal is being smuggled by bicycle to Jharkhand region, from Jharkhand to Bengal. Illegal white stone is being brought to Bengal, which is called Kuaj stone in the language of mafia. Its price is high in the market, and the price of coal is very high in Jharkhand. But the question was arising. It is being brought to Kalipathar MANTHAN reservoir under RouteMarch outpost, where coal is being smuggled by boat.
The police do not know anything about the ongoing business. However, it is known that there is a big person behind the smuggling business. However, the mafia is running such a big business every day. Stay with us for more news after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। News number 5. In the cattle smuggling case, Birbhum's domineering Trinamool district president Anubrata Mandal shocked that the Calcutta High Court did not give him protection. Here is the report by Rohit Mohanka. In the cattle smuggling case, Birbhum's domineering Trinamool district president Anubrata Mandal has suffered a setback in the Calcutta High Court. Did not give them protection. A division bench of Chief Justice Prakash SRIVASTAVA and Justice Rajarsi Bhardwaj on Tuesday upheld the decision of a single bench. The High Court directed that the decision of single bench be upheld in the matter. In the other words, if summoned by the Central Probe Agency, this time he will have to go to the CBI. CBI had issued notice to Anubrata 4 times in animal trafficking case, but he approached the Calcutta High Court fearing that he might be arrested. Earlier, a single bench of Justice Rajshekhar Mantha had dismissed the plea of Anubrata protection. Earlier in the single bench hearing, Anubrata Mandal's lawyer Vivek Tankha said many cases have revealed that the CBI has summoned and arrested many people as witness. If there is no such intention in the case, then give the CBI a clarification in front of the court. They will just record the statement and release it. Anubrata will not be arrested, Justice Rajasekhar Mantha said. The court cannot be used as a shield over or again. In any investigation, the court cannot blind the hands of the CBI in the matter. Stay with us for more news after the break. Angel Vidya Mandir, a sure road to success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8161830079. News number 6. On Tuesday, Asansol Mayor Vidhan Upadhyay held a meeting with various business organizations. Representatives of various business organizations of Silpanchal participated in this. The mayor held an introductory meeting with everyone. After that, listened to their problems. The mayor assured that such meetings would be held regularly. The mayor was also honored by the organization under the leadership of Deputy Mayor Wasimul Haq, SPFCI President VK Dhal, General Secretary Jagdish Bagri, announced during the meeting.
During this, Vinod Gupta of CREDAI, Shekhar Chatterjee, Guru Chaudhary of SBF CI, RP Chaudhary, Secretary of Asansol Chamber, Sambhu Jha, Pawan Gudgutia of Cement Manufacturers, Sanjay Tiwari, President of Coalfield Timber Association, Ajay Khaitan, and others were present. Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lalsar. Address Rishi Arbind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim, Bardhaman. For more information, contact 98328 24975. News number 7. Andal Thana area has become a free zone for thieves. Has theft, robbery, snatching and murder become commonplace here? Here is the report. Raniganj. According to Pawan Sharma, Andal Thana area gone. Has theft, robbery, snatching and murder become commonplace here? This question has come up in the face of everyone after the theft of 6 shops in a row on Tuesday. This time, the gang of thieves robbed 6 shops, including gold shops, grocery stores, sweet shops, and fast food outlets. Besides, they robbed queso nuts, scents, pista, and other valuable food items and cosmetics. Apart from this, the shop was robbed and some items of the shop were destroyed by scattering around the shop. Stay with us for more news after the break. Biofina. Drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. News number 8. The top of booths started resonating before the election in Asansol Lok Sabha by-election. Barakar. According to Sanjeev Yadav, the top of booth started resonating before the elections in the Asansol Lok Sabha by-election. The Election Commission has decided to deploy 116 companies of central forces in view of security. Has decided armed parliamentary forces will be deployed at every booth for fair and peaceful polling. After 8,500 soldiers are coming here, some companies of central force have reached. At present, it is coming in the central zone of Asansol Durgapur Police Commissionerate. From Tuesday morning, the central force started the route march. Central Security Force personnel conducted route marches in different areas of Barakar, during which they interacted with the people and asked them if there was any problem regarding voting. Someone intimidated them. 4 armed personnel of central forces will be deployed on the day of polling, where there will be 2 to 4 booths. There will be 6 soldiers in the polling station, where there will be 5 to 8 booths. 18 personnel of the central force will be stationed. Where there are 9 or more booths, it has been decided to keep 24 armed personnel of central forces. There will be also a central force in the strong room of EVMs. Stay with us for more news after the break. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563-830. News number 9. Russia's defense minister said that Ukraine's military capability is seriously degraded and it has no longer an air force. He also said that around 600 foreign mercenaries have been killed in Ukraine over the last 2 weeks. In the southern Ukrainian port city Mariupol, at least 3 people were killed and 22 wounded on Tuesday when a rocket struck a regional administration building. The Ukrainian Emergency Service as saying in an online post, it said
18 of wounded had been pulled from a rubble by rescue workers who continue to work at the screen. Meanwhile, talks between Ukrainian and Russian began in Turkey Tuesday without a handshake. Russia's defense ministry said it has destroyed a large fuel depot in Ukraine's Rivne region with cruising missiles on Monday evening. On the other hand, Russian Foreign Ministry Sergei Lavrov is likely to visit India this week, and the key focus is expected to be discussion on a payment system for New Delhi's procurement of oil and military hardware from Moscow. As per reports, it would be the highest level visit from Russia to India after Moscow launched its military offensive against Ukraine on 24th February. UN Secretary General Antonio Guterres had earlier said that he has been in very close contact with India and other countries including Turkey, China and Israel on mediation efforts towards bringing an end to the war in Ukraine. News number 10. Here is an exclusive interview with a young aspirant who has fielded as one of the candidates in Asansol Lok Sabha by-election. It has been conducted by Twinkle Barnwal. है कि अभी का टाइम में ठीक से रोज़गार नहीं मिलता है। तो जैसे कि वागन हम लोग का यहाँ बगल में, हम लोग वागन और इसको के बगल में ही रहने वाले हैं, तो इतना अच्छा कारखाना बंद हो गया। इस विषय में ना राज्य सरकार और ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इसमें एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किए, जो कि इतने आदमी लोग को अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ा और ये कारखाना अच्छा चलता हुआ कारखाना बंद हो गया। ये सबके लिए दुखद की बात है। इसलिए मेरा यही कहना है कि हर समय राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर इस सब विषय में कार्य करना चाहिए, ताकि वो कम से कम किसी का रोज़गार जाने ना दे, नहीं दे पाए तो जाने ना दे। जिस तरह से अभी इसको का जो पोजीशन है, अगर इस पर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया, दोनों सरकार का अगर सहमति इसमें अगर नहीं हुआ, तो इसको भी बहुत जल्दी ही कुछ उसी तरह का आदमी को देखना पड़ सकता है। तो इस तरह से आदमी कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक जाएगा। आज रोज़गार नहीं है तो आदमी को दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाकर के अपना पेट भरना पड़ रहा है, गुजारा बेचारा करना पड़ रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि सर, हम लोग युवा हैं, हम लोग की बात को सुना जाए, हम लोग की बात को रखा जाए। आप लोग कम से कम जो भी पुराना कारखाना है उनको देखें, उन पर ध्यान दें। और सबसे बड़ा मेरा तो यही मुद्दा था कि मैं अपना चुनाव में एक मुद्दा लेकर उतरा हूँ कि सनी शाह का एक ही नारा, स्वस्थ रहे बंगाल हमारा। तो मेरा कहना था कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 लाख रुपया करके प्रत्येक आदमी को जो दिया जा रहा है स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, वो खर्च ना करके, वो पब्लिक को ना दे करके, उनके ऊपर ना खर्च करके एक एम्स ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण अगर यहाँ कर दे, तो उनको ये पैसा जनता को देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फ्री में सब कुछ हो जाएगा। एम्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है हम लोग भारत में, सब जानते हैं, बहुत कम संख्या में है। तो इस तरह का अगर हॉस्पिटल का अगर निर्माण होने लगे तो हम लोग, जैसे मेरे पिताजी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, उनको हम लोग को बेंगलोर लेके जाना पड़ा, चेन्नई लेके जाना पड़ा, हैदराबाद में लास्ट में जाकर उनको ऑपरेशन हुआ। एक तो पैसा खर्च प्लस हैरेसमेंट और भाषा में भी हम लोग को दिक्कत होता है। तो हम यही बोलते थे कि एम्स ऐसा हॉस्पिटल बने पश्चिम बंगाल में, हमारे आसनसोल में, ताकि हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को अन्य राज्यों में जाकर के अपना चिकित्सा व्यवस्था ना कराने की आवश्यकता पड़े और बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के ही लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने। ऐसा फील होता है कि हम लोग बंगाल में घूम रहे हैं, इस तरह का कंडीशन वहाँ पर बना हुआ है। तो हम चाहते हैं राजनीतिक से परे हटकर कुछ विकास के रास्ता में आगे बढ़ना चाहिए सरकारों को, कि मार, खून, खराबा इस सब से बाहर निकले। अगर सच में अगर आप लोग राष्ट्रभक्त और देशभक्त बनना चाहते हैं तो देश के प्रति काम करिए, सुविधा दीजिए, जनता को इस हिसाब से सुविधा दीजिए। और
जैसे कि नजरुल विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर टीएमसी पार्टी के द्वारा है कि वो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम ना आकर के अगर आसनसोल के खुद पे अगर अपना नाम पर अगर यूनिवर्सिटी हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। उसमें किसी धर्म समुदाय का लेकर के मारा मारी नहीं होगा। हिंदू नहीं बोलेगा हम उसमें नहीं पढ़ने जाएंगे, मुसलमान अगर कोई हिंदू का नाम पर अगर कोई यूनिवर्सिटी बने तो मुसलमान बोलेगा नहीं हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं अगर आसनसोल का डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके नाम पर खुद का एक अपना प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि हम लोग का खुद आसनसोल का जनता गर्व से उसमें हम लोग काम कर पाए और हम लोग गर्व से उसको आगे बढ़ाएं कि नहीं हम आसनसोल विश्वविद्यालय का आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमको किसी वहाँ राजनीति को नहीं उतारना। अगर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम दे करके अगर चलाएंगे तो राजनीतिक होगी। तो ऐसा करना है, राजनीतिक से परे हटके हम लोग को आगे शिक्षा व्यवस्था में भी काम करना है। यही सब मेरा मुद्दा है। हम चाहते इस तरह का हो। अगर हम सांसद चुन के आए या ना आए, सरकार को इस सब बात में ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह करके आजकल का युवा बात मान रहा है कि इस तरह से हम लोग को मिलना चाहिए सुविधा। लड़कियों के मामले में आपका क्या विचार है? लड़कियों को देखिए सरकार की तरफ से 25,000 रुपया, अभी राज्य सरकार के द्वारा 35,000 रुपया करने का बहुत अच्छा की है, मैंने सहयोग किया जा रहा है। तो इसमें और थोड़ा बढ़ावा होना चाहिए धनराशि में, ताकि और गरीब बहनों का शादी ठीक ढंग से हो पाए, यही है। और सुरक्षा के मामले में एकदम ऐसा सुरक्षा हो, मैंने इतना हम लोग में भेदभाव हटा देना चाहिए लड़का लड़की को लेकर के, ताकि लड़की लोग भी खुल के अपना बात को रख सके और वो आगे बढ़े। इस तरह से मेंटेलिटी हमारे समाज में आ गया है कि नहीं लड़की है तो आप बाहर मत निकलो, पढ़ो मत। नहीं, हम लोग को भी शिक्षा देना होगा। हम लोग को अपने घर में जितने भी बेटा है जिसके है उनको भी समझाना होगा कि हर लड़की को एक सम्मान के रूप से देखा जाए, ताकि वो लोग और फील ना करे, जाके कहीं पर भी जाए तो एकदम मैंने निश्चिंत होकर चले, चिंता ना करे कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए लड़की को भी पूरा आज़ादी मिलना चाहिए और आज़ादी से रहे। बस यही मेरा है कि अच्छा से उन लोगों को देख रेख होना चाहिए ताकि खुल के जी पाए। SMS of the moment. The hardest battle is between what you know in your head and what you feel in your heart. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.